with components सेम जो उधर था PQR having continuous partial derivatives on an open region in R3 containing V, then double integral f bar n cap ds. Same, huh? You don't get to scare with n cap, huh? That is just for that. This will change in triple integral V divergence of f dv. डाइवर्जेंस मतलब पता है तुमको डेल डॉट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट where n cap is the outward unit normal vector to S. Just read the statement. Basically अपने को मतलब in the syllabus we are having for cube, but this is true for any in general. Okay, so before going to that examples, let me just do some uh, one more part is there, actually divergence theorem, but you see both are same. ये in general cube के लिए था, that this will be in general. Let V be a solid in R3. In previous cases V was a cube bounded by an orientable closed surface S, and let n cap be the unit outward normal to S. Let f cap be continuously differentiable vector field on V. Then क्या था? Triple integral of divergence of f dv, that is same as double integral r cap and ds. This is your S and this is your V. ठीक है? r cap is your f भी लिखा था भी चला. Oh sorry, I should write f यहाँ. This will be f जो पहले था अपना. Okay. So let us see some corollaries, you can say. If S and V satisfy the condition of Gauss divergence theorem and scalar field f and g
F and G components of F cap have continuous partial derivative, जो पहले था continuous partial derivatives, and n cap be unit outward normal than. The first one is E cap dot n cap ds, that is 0. Okay, where E cap is a constant vector. Now you see right hand side 0 क्यों हैगा, because right hand side will be changed to divergent, and divergent of A अगर लिया, since A is a constant, so उसका divergent क्या आएगा 0, तो it will be 0. So by using Gauss divergence you don't have to prove everything. If your A cap is constant vector, then it will be directly 0, you can say. And by using that Gauss divergence you can also find volume. So volume will be given by 1/3 of R bar n cap ds. Curl f dot n cap ds is 0. Now you see curl f क्या होता है, del cross, and हम लोग ने पहले देखा अगर divergence of curl f रहा, so that is 0, so that's why this is 0. In the case of properties of curl and divergence, I already told you. If f delta g है dot n cap ds, so this will be changed as triple integral f delta square g plus delta f delta g. It is something like dot product. So ये भी हम लोगों ने पहले देखा, अगर इसका डाइवर्जन लिया तो ये आता है. दिस इज सेम थिंग, वही है. One more is there. F del g minus g del f. अगेन इसका भी डाइवर्जेंट ही लेना है, दैट्स इट. यू विल सी दो बारी इसमें यू वेरिएबल लगेगा इस पे, एंड both will get added and form this f delta square g minus g delta square f dv. Proofs are simple since divergent ही लेना है, और हम लोग ने डाइवर्जेंस के केस में पहले से ही दिया था वो. Let us do some problem on that. Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem is the last topic of your syllabus. The question is verify Gauss divergence theorem for the following vector field. Let me give the first one. Suppose f of x y z, that is given by 2xi plus 2y j. Oh, this is 2xi, this is xyj plus xzk, and g is the cube bounded by planes x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0, y equal to 2, z equal to 0, z equal to 2. So you can say it is a cube with side length is 2, correct? So first thing, जैसे पहले कर्व निकालते थे, इधर पहले डाइवर्जेंस निकालो. डाइवर्जेंस ऑफ f is del dot f. So क्या आएगा del f? It will be a scalar ना, क्या आ जाएगा? It will be 2 plus y plus x, correct? So अभी फर्स्ट पार्ट हुआ अपना. Now
अगर तुमको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, द सॉल्यूशन विल बी फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल पार्ट इजी है सॉल्व करना, एंड बट दैट पार्ट इज क्वाइट लेंथी, यू विल सी, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी फेमस थिंग। सो ये क्या आएगा, 0 to 2 वो केस में ये डबल इंटीग्रल में चेंज होता था, इधर ट्रिपल इंटीग्रल में, एंड दिस विल बी 2 + x + y। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, डू यू सी हाउ सिंपल इट इज टू सॉल्व दिस ओवर दैट। सो क्या आएगा ये, यू कंप्लीट दैट क्विकली। you'll see जब हम लोग वो फॉर्म से करेंगे तो ये कितना लेंदी जाएगा, बट नाउ बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी सिंपल 4 लाइन में आंसर आएगा। सो अभी तो इंटीग्रेशन करना दैट इज क्वाइट इजी, dx dy dz है विथ रिस्पेक्ट टू x किया, टू कंप्लीट दैट क्या आएगा, दैट इज आई थिंक 32 आ रहा है, जस्ट वेरीफाई यू आर आल्सो गेटिंग 32। Okay, now we have to evaluate. Hello, hello, huh, okay, good. So now we have to do the left hand side, that is as you see the statement of Gauss divergence theorem। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, दैट वाज क्वाइट इजी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, सिंस इट इज अ वेरिफिकेशन, इफ इट वाज द सॉल्विंग पार्ट देन हो जाता, डायरेक्ट बोल सकते थे हम लोग। That is we now evaluate double integral s f cap dot cap ds where s is the boundary of g। वहाँ पे भी ऐसा ही था। सो डू यू सी बड़ा कौन है सबसे, स्टोक्स थ्योरम ज़्यादा अपीलिंग है कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ सिंस इट इज़ अ बाउंड्री ना, तो बाउंड्री क्या आएगा बोलो, बाउंड्री ऑफ जी, इट इज़ द क्यूब। सो ये 6 पार्ट में डिवाइड होंगे, यू सी देयर आर 6 फेसेस। It will be S1, S2, S3, S4, S5, S6। क्या आएगा S1, प्लेन Z इक्वल टू 0, प्लेन Z इक्वल टू 2, नेक्स्ट प्लेन Y इक्वल टू 0, प्लेन Y इक्वल टू 2, प्लेन X इक्वल टू 0, प्लेन X इक्वल टू 2। This is what you are having. Six. These are the boundaries. Correct. Now we have to solve this over all 6 faces. So there will be 6 outward normals, n1, n2, n3, n4। If I draw the graph, something like that. So इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर जाएगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पे, करेक्ट, एंड वो जो पीछे वाला है उसका उधर जाएगा, ये वाले बंदे का आउटवर्ड नॉर्मल इधर कहीं पे आएगा, यू सी, एंड इसका नीचे, ऐसे देयर आर 6 आउटवर्ड नॉर्मल्स। लेट मी राइट, लेट n1 cap, n2 cap, n3 cap, n4 cap, n5 cap, n6 cap be outward normal, unit normal vector of the surfaces जो भी हैं, S1, S2, S3, S4,
S5, S6. There are 6 surfaces. सबके लिए आउटवर्ड नॉर्मल है. हाँ, नाउ इन दैट केस दैट इज क्वाइट इजी टू चेक आउटवर्ड नॉर्मल क्या रहेगा. N1 क्या रहेगा, कैन यू टेल मी. यू सी, अगर सपोज मैंने N1 इसको बोला तो ये क्या रहेगा. दिस इज N1 इज सरफेस फॉर Z प्लेन Z इक्वल टू 0. इफ योर प्लेन Z इक्वल टू 0 मतलब XY प्लेन है. इफ यू आर हैविंग दिस XY प्लेन तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या रहेगा, ऊपर जाएगा ना. यस, ऊपर गया तो K, नीचे गया तो -K. यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल. यूनिट मतलब यूनिट तो रहना चाहिए इसका मॉडुलस एंड आउटवर्ड नॉर्मल. सेम हियर, और यहाँ पे देखो ये साइड गया तो इट विल बी y एक्सिस पे पैरेलल है ना, so it will be j, this will be -j, like that. So I'll write, just verify that n1 equal to k, n2 equal to -k, n3 equal to वेट, n1 तो मतलब नीचे आ रहा है ना. ये n1 किसके लिए है, प्लेन z इक्वल टू 0 के लिए. हाँ, z इक्वल टू 0 के लिए नीचे आ रहा है ना. दिस इज द प्लेन z इक्वल टू 0. डू यू सी, z इक्वल टू 2 तो ये है. सॉरी, दिस विल बी n2, दिस विल बी n1. ठीक है. सो n1 will be -k, n2 will be k, n3 will be -j, n4 will be j, n5 will be I, n6 will be, oh sorry, this is -I, this is I. कैप कैप कैप. करेक्ट. ये हो गया. अच्छा, नॉर्मल वेक्टर हो गया अपने पास. अभी क्या चाहिए तुमको, एज पर द डेफिनेशन. डू यू नो हाउ टू सॉल्व दैट. पैरामीटराइजेशन ना. सो हर एक का 6 लोग है, 6 का पैरामीटराइजेशन निकालना है. पहले S1 के बारे में देखते हैं. S1 is parameterized by, what is your S1, Z equal to 0 ना. so XY plane तो क्या आएगा ये, R1 of XY. can you tell me. yes, Z equal to 0 है ना. what will be the parameterization of S1. look at the surface S1. what is your S1. S1 is your plane Z equal to 0, correct. so what is the parameterization for that plane. parameterization मतलब x y z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट बताना है तुमको. similarly S2 के लिए, S3 के लिए, like that. can you find the parameterization of that. Z equal to 0. what are the bounds for x and y. 0 to 2 ना. bound for x and y is 0 to 2. yes,
Z axis is 0. What about xy? Yeah, it will be y x0. R1 का पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, R1 का पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y करो, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट R1 सॉरी R विथ रिस्पेक्ट टू x क्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू y, ये R1 है विथ रिस्पेक्ट टू y, यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज R1 क्या आएगा J एंड दिस इज I. सो क्रॉस प्रोडक्ट तो इजी है निकालना ये केस में, I J केस. सो दिस इज एक्चुअली 0 1 0, दिस इज एक्चुअली 1 0 0. सो क्या आएगा, दिस विल बी माइनस के, विच वी हैड ऑलरेडी गेस्ड कि यही आएगा. डू यू रिमेंबर N1 को हम लोग ने पहले गेस किया था कि नॉर्मल वेक्टर ये आएगा माइनस के, यहाँ पे भी देखो वही मिला, दैट इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल. So what will be that integration? S1 f bar dot n1 ds. So this will n1, हाँ ये notation है समझा. So this will be changed as 0 to 2 0 to 2. This is f of r bar of x comma y multiply by dou r1 dou x cross product with dou r1 dou y. करेक्ट, ये सॉल्व करना है तुमको. दैट इज दिस इज 0 to 2 0 to 2. What was your function? What was the function? Just check. 2x xy xz na. So this will become r of xy क्या है? So this will be y x0 and this is minus k. Just put it in the equation, put it in the function, you will get that. माइनस की ना, तो यहाँ पे k है और यहाँ पे xy, तो i और j का टर्म है ही नहीं, तो दिस इज 0 हो गया. Okay. What about S2? S2 is parameterized by, so that is R2 bar of xy and that is what it is given by. Z coordinate क्या आएगा R2 के लिए? S2 मतलब प्लेन कौन सा है देखो, Z इक्वल टू 2 ना, बोलो अभी. x y and 2. Okay, what will be this? This will be 1 0 0 and this will be 0 1 0. Find the cross product and check वो k आता है क्या, क्योंकि हम लोग ने पहले गेस किया k आना चाहिए. लेट अस सी. Go y, sorry I'm not able to write here. Check whether ये k आता है क्या. Good. So this is the normal vector and you know कैसे solve करना है आगे. Correct. This will be f of r of xy and dot product with that rxy. And I will do that. That is again 0 to 2 0 to 2. It will be f bar of r2 of xy multiply by dou r2 by dou x comma dou r cross na, cross product dou r2 by dou y, and you just complete that.
यू विल सी यहाँ पे शायद रहेगा वो। ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 to 2 0 to 2, this is f of x y and 2 and this is what is that r2 cross, that is key ना, so मतलब जस्ट की कोऑर्डिनेट का यूज़ है अपने लिए, करेक्ट। एंड की कोऑर्डिनेट क्या है, फंक्शन क्या बोला है, x2 x xy xz, so if you put xz that is 2 so here answer is 8। सिमिलरली मैं बाकी सब का आंसर्स दे देता हूँ मैं, you know now the technique of that, S4 S5 S6, ठीक है। सो S3 is again 0, S4 is 8। इवन अगर तुम लोग शायद SY BSc में फिजिक्स में ऐसा कुछ किए होगे लाइन इंटीग्रल का, उसमें भी है। S5 क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा। एंड दिस S6 is S6 S6 is the main गाइस, इसमें आई थिंक 16 आएगा। सो व्हाट इज द टोटल एडिशन, दैट इज 8 प्लस 8 प्लस 16, S1 तो 0 ही है ना, सो फाइनल आंसर विल बी 8 प्लस 8 प्लस 16, दैट इज 32। एंड इन द डायरेक्ट हम लोग ने देखो गॉस डाइवर्जन की वजह से जो 4 लाइन का था, जो हम लोग ने 4-5 पेज में किया, दैट कैन बी डन इन 4 लाइन just by using Gauss divergence theorem. So this is the importance of that. You can find the surface in it. Let me just do one more example on this Gauss divergence theorem. The question is, use divergence theorem to evaluate the surface integral that is FMDS, where f cap of xyz that is equal to xi plus yj plus zk, and S is the surface of the plane x plus y plus z equal to 1 in first octant. Okay, so this is the case. So you need to solve this by Gauss divergence theorem. What is the theorem? This is same as divergence of f tab dv, correct? So ये surface integral ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। So क्या आएगा बोलो? So this will be find the divergence. Divergence क्या आएगा ये function का? Can you quickly tell me? With respect to x, with respect to y, 3 आएगा ना? It will be triple integral 3 dv मतलब क्या, dx dy dz. Now we need to change this guy. Now you need to come back to a ट्रिपल इंटीग्रल में कैसे करते हैं इसको। किसी एक बंदे को फिक्स रखूँगा 0 to 1, सपोज मैंने dz को फिक्स रखा, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ z, सो दिस विल बी, सपोज हम लोगों ने dy रखा है, लास्ट विल बी 0 to 1 minus y minus z।
दिस इज इस पार्ट हम लोग ने किया है, इफ यू रिमेम्बर। शायद ऐसा ही पूरा डिटो क्वेश्चन था। दिस वाज द प्लेन, शुड हैव ड्रॉन लाइक दैट। दिस वाज द प्लेन एंड ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है तो जीरो से लेके अपर लिमिट एंड एक्स वाई प्लेन में। हियर मैंने वाई जेड लिया, वाई जेड प्लेन में लिया एंड लाइक दैट, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, दैट्स इट। आंसर विल बी 1/2। So do you see the surface integral? ये that was not that much easy. But with the Gauss divergence theorem, you don't have to do anything. Just divergence निकालना तो easy है. फिर उसके बाद you are making it in triple integral. That's it. Hmm. Uh, okay. I'll just stop.